Former Odisha throwball captain Chayakant Mahanand has alleged mental harassment by the state sports department over the non-issuance of his sports card, despite fulfilling all eligibility criteria for the past 3 years. Mahanand, a national-level throwball player who has represented Odisha in 3 national throwball championships and captained the team in 2 of them, said he has repeatedly approached the department to obtain his sports card but has been ignored. This is my right as a national player. Even after running from pillar to post for 3 years, the department has not issued my sports card. I feel neglected and harassed, Mahanand alleged. Mahanand has reportedly threatened commit suicide if the sports department fails to provide him the card immediately. Officials from the sports department are yet to respond to the allegations. सी मत विभिन्न प्रकार कथा कहीकि मत से पठे दियो 2023 रु आज 2026 है धर स्पोर्ट्स आई कार्डटा पाई पार था मु कनेस्टेबल आर्मी जो थे गोटे यूटिलाइज कर पार था मु एका नुह मु आज आज देखा कर दूची ऑफिस रे मु गाइड दे दूची सेडा नुह ओडिशार प्रति कोण रे आई कार्ड पे पिला अनै बसछन्ती क्या घर कलाहांडी क्या घर बलांगीर क्या घर संबलपुर से डेली सब बेले आसब तो संभवपर नुह मु 2023 रु आज है 2026 जाए 20-25 थर आसी डायरेक्ट स्पोर्ट्स से देखा किंतु नो रिजल्ट बाध्य हो सर मु सुसाइड अटेम्प्ट करी मो धर भविष्य कहीं भविष्य तो सर मो भविष्य तो बर्बाद कर सारे 3 वर्ष मो सहित दौड़ आउ कौन कर सर मु धर स्पोर्ट्स मिनिस्टर तांकू देखा कर मुदर पाऊनी ओडिशार लाभ कौन सर ओडिशार बहुत पिला एमती हराण होउछन्ती।